without wasting much more time. जिनका करेक्ट नहीं हो रहा उनके लिए तो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि वो देख ले बाद में, क्या कर सकते हैं बताइए। कम से कम जूम में ऑप्शन तो है बस रिकॉर्डिंग। यस सर। चलिए, so next we were talking about Serret Fernet formula, है ना? Formula. So this formula tells about the relation between the derivatives of Fernet dihedral components. That means T, B, and N. So we already have two formulas. T dash means dt over ds. Plus kappa n, and we also have P dash, which is dB over ds, and it was minus tau n. Now I am interested in finding Tn over ds because only that component is remaining. We find n dash. Mute कर दो मेरे अपने माइक से। Let me speak only. So dn over ds I want to find. Okay. So how I will find it? See now. We already have what? I want to find n. So I will take something in n. We know that n is a unit vector. That means I can write n dot n is equal to 1. Okay. This is the formula. सर आप म्यूट कर दिए सर। म्यूट नहीं करेगा। सजावली के डिस्टर्बेंस हो रहा है। इसका डिस्टर्बेंस। अरे नहीं सर, मेरा डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा। मैं तो आपसे कह रहा था सबको म्यूट कर दिया। आप बोल रहे थे मुझे उस टाइम आपके माइक लगा। जी अंजला जावेद। चलिए ठीक। चलिए। So we have n dot n is equal to 1. So I will find derivative. So I will take its derivative. The derivative will become how much? On differentiating, it means what? So on differentiating with respect to s, we get. So you will be getting n dot dn over ds is equal to 0. That means this vector n is perpendicular to dn over ds. Okay? Yeah, pata. We have done this several times. Now, if n is perpendicular to dn over ds, you know we have t, n, and b. So if something is perpendicular to n, in which plane it will be lying? In the plane generated by t and b. What is that plane called? What is that plane called? Generated by t and b. This implies that vector n is lying in the rectifying plane. In the rectifying plane. Okay? It is your rectifying plane. It is your oscillating plane. It is your कौन सा plane था ये? Normal plane. So if it is lying in the rectifying plane, n can be written as a combination of the vectors generated by of G and B. So I can write. सर ठीक है सर 6 बार में कनेक्ट हुआ है। कोई बात नहीं, वैसे आप ज्वाइन हो जाइए आप। So this implies that Gn over
n is perpendicular to dn over ds. So in fact, I can say vector n dash is parallel to the n dash लिख देते हैं क्योंकि n dash में हमें निकालना n dash. So I can say n dash is not the n is lying in the rectangle क्योंकि n के perpendicular. It means what? N dash can be written as linear combination of T and B. Okay, I can write this. Now I will find what is alpha and beta. Once we got alpha and beta, we are done. So I am interested in alpha and beta. इस equation number डाल दिए. So now how I will find alpha and beta? What I will do? Firstly, I will find alpha. So what we will do? We will take the dot product of n dash with t. उससे क्या हुआ? देखो जैसे हमें if you want to find two unknowns, so you know one method is what? Elimination method. So firstly, I will eliminate first. I want to find t, so I will eliminate b. So how you can eliminate b? By taking the dot product with t, this term. So what will happen? I will take the dot product. This implies that this n dash dot t, it will become how much? Alpha t dot t plus beta b dot t. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Mute, please. So it will become how much now? Dot t is what? 1. Dot product cos theta, है ना? So cos 0 is 1. So you have b alpha. Dot t is minus. And b dot t is 0. So you got only alpha here, है ना? Only alpha is alpha scalar. Alpha तो बचेगा. बोलिए. Yes, sir. Somebody is messaging me or what? कुछ इसमें आवाज आ रही है. जैसे कोई नोटिफिकेशन होता है ऐसा कुछ तो नहीं है. लैपटॉप में तो नहीं हो रहा है. So we got alpha देखो है ना, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? In equation 3 I want to find alpha and beta. So you got alpha is equal to n dash t. So the next we have, so you got alpha is equal to n dash t. इसे अभी हम फाइंड करेंगे. इसे हम इक्वेशन 4 रखे हुए. I will find what is this n dash t. Now we know further we have how much we have. We know that t dot n is how much? Dot product of t and n. Zero or 1? T n. They are perpendicular to each other. 0 sir. 0 है ना? You know t dot n is 0 because they are perpendicular to each other. So this means now I will differentiate this. So where you will differentiate, you will having t dash dot n plus vector n dash into t is equal to 0. So that means you got t of n dash is equal to minus t dash n. And t dash is what? Kappa n. So I can write, है ना? We have already this thing, kappa n. So you have minus kappa n dot n, and n dot n is again 1. So you have minus kappa, है ना? तो इसकी वैल्यू आपकी in terms of kappa आ गई, minus kappa. So it means what? So 4 में putting in 4, alpha is how much? Minus kappa, है ना? तो alpha की वैल्यू निकल आई.
in terms of some known factor. Same thing I can do for what? Yes, beta. Now what I will do? Therefore, again taking the dot product of 3 with beta with vector b. b से लेंगे देखो. So now again 3 आपके पास क्वेश्चन क्या थी? 3 was n dash is equal to alpha t plus beta b. 3 में अल्फा तो निकल आया. अब आई एम टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विथ b vector. So what will happen? This will become 0, and here you will be having beta because b dot b is 1. So this implies that beta is nothing but n dash. So I will find, it is equation 5. Now I will find beta in terms of n dash b. So you know, here I took t dot n 0. Now I will take further. We have now, because I want to find n b, so I will take n dot b is equal to 0. Now what I do? What is next step? Differentiate. Differentiate कर दें इसे. Yes, sir. Same, because I want n dash b. So when you will be differentiating, you will get n dash dot b plus n into B dash. b dash is equal to 0. So this implies that n dash b is equal to n dash b is equal to minus n B dash. b dash. इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं. b dash के टर्म में क्यों लिया है? क्योंकि मैं b dash की वैल्यू ऑलरेडी पता है. I already know what is b dash. Okay, so I can find it. मोहम्मद दानिश का डिस्कनेक्ट हो रहा है बार-बार. इनका मैसेज आ रहा है. क्या करेंगे? सर मुस्तफा का हो रहा है बार-बार. मेरा भी होने वाला है. क्या करें यार बताओ. हो जाए तो दोबारा आ जाइएगा, मैं ऐड कर दूंगा आपको. ठीक है, ये कर सर वेबएक्स ज्वाइन कर सकते हैं. वेबएक्स जी, तो रिकॉर्डिंग भी जाती है. चलो. So we got this. So we got vector n b dash, है ना. ये वैल्यू आ गया आपकी इसकी n dash b की. And b dash is how much? You know क्या होता है b dash? Minus tau n. minus tau n. ठीक है बस. Yes, so you can write minus tau n, and n dot n is again cos, because cos theta cos 0 is 1. So you got. सर एक और माइनस बाहर में. अच्छा, एक माइनस पीछे यहाँ इसके साथ माइनस था. ये एक माइनस टर्म्स का चल रहा है. So you got tau. So this implies that beta is equal to जो n dash b था आपका, है ना. Beta was how much? n dash b. ये निकाला था 5 से. So equation 5 implies that beta is equal to tau. So it means you got Tn over ds. Hence this n dash, which is Tn over ds, is equal to minus kappa vector t plus tau vector. Okay. So it means you got a relation between the derivative and this. Thus, you can write thus t over ds is kappa n, dv over ds, it was minus tau n, and dn over ds, which you just calculated, which is minus kappa t plus
tau b. Am I audible? Yes sir. Yes, sir. तो मेरा ब्लूटूथ वही था, ये हेडफोन ये डिस्कनेक्ट हो गया एक्चुअली, इसकी चार्जिंग खत्म हो गई शायद, ये आ रहा था। चलिए कोई बात नहीं, माइनस टाउ भी। ओके, सो यू गॉट दिस। इसको अगर आप चाहें तो यू कैन राइट इन डिटर्मिनेंट फॉर्म, इन मैट्रिक्स फॉर्म आल्सो। देखो हाउ आई विल राइट टी डैश एन डैश बी डैश, है ना, इसे मेमोराइज करने के लिए। इफ यू वांट टू मेमोराइज इट, so you can write in the matrix product form. How? So t dash and, है ना, I am writing in order. You know order हमारा क्या था, t and b था। t dash n dash b dash, this I can write is equal to, I will write a matrix 0 kappa 0 minus kappa 0 tau 0 minus tau 0 and t and b, है ना। t and b का ऑर्डर तो है, यू हैव इन ऑर्डर t and b, सो दिस विल इक्वल टू हाउ मच दिस। देखो अब अगर आपको t डैश निकालना है यहाँ पर, यू जस्ट सी t डैश इज व्हाट, सो इट्स अ डॉट मैट्रिक्स प्रोडक्ट 3/3, एंड इसको जब आप सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, देखिए t डैश विल बी हाउ मच, 0 into t प्लस कप्पा into n प्लस 0 into b, तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, कप्पा into n, है ना। n डैश विल बी हाउ मच, when you will take इसका प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, it will give you 3/1 मैट्रिक्स। क्यों भाई? यस सर। Yes, sir. तो इट्स अ 3/1 मैट्रिक्स, और जब आप इक्वेट कराएंगे तो यू विल बी गेटिंग दिस थिंग। तो इसको इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं, इट इज योर, इफ यू सी, ये कैसी मैट्रिक्स है, Symmetric. हैं? Skew symmetric. Yes. Skew symmetric. Skew symmetric matrix because diagonal entries are 0 and you have the minus times of the upper triangular terms। अगर आप ट्रायंगुलर की जो ऊपर आपके एंट्रीज हैं इसका माइनस टाइम, तो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लाती है, इसका आप जब ट्रांसपोज निकालेंगे द ट्रांसपोज विल बी माइनस टाइम्स ऑफ इस मैट्रिक्स को। मैं ये कह दूं तो ये ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस है ना। सो इन दिस वे यू कैन write this, so it's a relation in t dash n dash and so these formula all together called Serret Fernet formula। Next we have Darboux vector, DARBOU, एक vector, इसको we are saying Darboux vector। And what is Darboux vector called? We define a vector. We define a vector D। एक वेक्टर हम डिफाइन करते हैं D by vector D is equal to tau vector tau t प्लस कप्पा b। हमने डिफाइन किया वेक्टर, टी बी आपके वेक्टर थे, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया इन टर्म्स ऑफ टाउ एंड कप्पा। इस वेक्टर को हम कहते हैं डार्बॉक्स वेक्टर। देन D is called Darboux vector। So Serret formula we can write in terms of D. The Serret Fernet formula can be written in terms of D. In terms of D. How? देखिए T dash क्या था आपका, what was T dash?
कप्पा n, है ना? So t dash will be what? n कैसे आएगा यहाँ पे? d क्रॉस t. देखिए what is d क्रॉस t? Tau t क्रॉस t plus kappa b क्रॉस t. Tau t क्रॉस t is how much? 0, Yes, sir. है ना? And b क्रॉस t is how much? माइनस n Minus n. है? माइनस n n, positive n, यस है ना? Because these are the unit vector, the mod will become 1. So this is t dash, then b dash will be t cross b, and n dash will be t cross n. So it has a expression, and it is actually, you can say it's a symmetric simple expression. T dash is d cross t, b dash is d cross b, and n dash is d cross n. So this can be written in this form. So this is called Darboux vector, and this Serret Fernet formula can be written in terms of Darboux vector also. Okay. Next, we have a definition. Helices. Just a minute, students, एक मिनट रुकिए. Yes. So next definition we have हेलिक्स. हेलिसेस, तो आप हेलिक्स पढ़ते हैं तो वही इन जनरल व्हाट इज हेलिसेस. यस, am I audible? Yes, sir. जी सर. सर So we have helices. L-I-C-E-S, helices. It's also called curves of constant slope. Constant slope. So look at the definition. A curve is called a general helix. General helix or a cylindrical helix or a cylindrical helix. Cylindrical helix or a curve of constant slope. ये भी कह सकते हैं constant slope, fixed slope. If there is a fixed vector in a space, फिक्स वेक्टर मतलब क्या होगा कि कोई लाइन अगर आप फिक्स कर दें तो वेक्टर फिक्स हो जाएगा, उस पे एक ही डायरेक्शन में होगा. So there is a fixed vector in space such that the angle alpha between the
between the tangent lines this is the characteristic of this helix, between the tangent lines at each point of the curve and the fixed vector is how much? Constant. Okay, so what is the property? You can say the tangent lines at each point of the curve. You have, suppose you have any curve and you just draw the tangent lines at each point of the curve. तो क्या होना चाहिए? This curve will make a fixed angle alpha with a fixed vector. जो हमने एक fixed vector कर दिया है उसके साथ क्या होना चाहिए? हमेशा एक ही एंगल बनाए, कांस्टेंट एंगल. ओके, ऐसा कर्व पॉसिबल है? यस सर. कौन सा है कर्व वो? अच्छा कौन सा? तो क्या ऐसा कर्व जिसके आप यू जस्ट टेक अ टेंजेंट ऑफ एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट पे टेंजेंट लें एंड दिस टेंजेंट विल बी मेकिंग अ कांस्टेंट एंगल विद अ फिक्स्ड वेक्टर विद अ फिक्स्ड लाइन. ऐसा अगर कोई कर्व होगा उस कर्व को हम क्या कहेंगे? जनरल हेलिक्स. कौन सा कर्व है? एक सबसे आसान कर्व बताओ, ऐसा कौन सा है? स्फीयर सर. स्फीयर? क्यों? स्फीयर पे अगर आप, स्फीयर क्या मतलब सर्किल की बात कर लो. चलो अगर मैं उस पर आ जाऊं तो ये स्फीयर भी अगर आप लेंगे, सपोज इट इज योर स्फीयर, तो इस पे तो हर उस पे यार टेंजेंट की लाइन बदल रही है. कहाँ है ये किसके साथ फिक्स एंगल बना रहा होगा बताओ? दिस इज अ टेंजेंट लाइन. नाउ कौन सा वेक्टर फिक्स करोगे जहां पर ये एंगल सेम बना रहा होगा? नहीं बताना सर. तो सबसे आसान कर्व क्या है? ट्रिवियल कर्व जिसे बोल सकता हूँ. आई कैन से अ ट्रिवियल कर्व, अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन. अब यहाँ पर कोई भी आप एक फैक्टर फिक्स कर दो, मान लो ए. अब आप यहाँ पे हर एक पॉइंट पे टेंजेंट ले लीजिए, वो सब इसके साथ कितने एंगल बना रहे होंगे? 90 डिग्री. है कि नहीं है? क्योंकि at every point the tangent is nothing but the line itself. क्यों ले सकते हैं? नहीं तो लाइन अगर आप ले लें तो लाइन इसमें ऐसा होगा, लेकिन इसके लाइन क्या, ये तो एक ट्रिवियल एग्जांपल है, बट देयर आर अदर कर्व जो आपका बेसिकली हेलिक्स है. द सर्कुलर हेलिक्स इज अ स्पेशल केस ऑफ सच, है ना, जो मैं हेलिक्स, इसका नाम ही हेलिक्स है. तो जो आपका हेलिक्स होता है, जैसे मैं जो सर्कुलर हेलिक्स अगर लिखता हूँ इस तरीके से लेता हूँ मैं, अगर ये, तो ये हेलिक्स बेसिकली है क्या? इट इज द पाथ ऑफ द सिलेंडर. ये तो है, इसके अगर आप ज्वाइन करें सिलेंडर बन जाएगा ये. तो जो सिलेंडर की एक्सिस होगी, सिलेंडर की एक्सिस क्या होगी? अगर मैं इसको सिलेंडर बना लूँ इस तरीके से, तो ये हेलिक्स क्या होता है? इसका पाथ होता है सिलेंडर का, ये इसके यहाँ से होके जा रहा होता है. तो अगर मैं इसकी एक एक्सिस, व्हाट इज द एक्सिस? ये एक्सिस होती है इसकी, आपको सिलेंडर की पता है, जो 20 से होके आती है ना. यू हैव स्टडीड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. सिलेंडर इज व्हाट? टेक अ लाइन व्हिच इज कॉल्ड जनरेटर and just rotate it about a fixed line. It will generate a cylinder. So this is called axis. तो जो axis है, this axis will be working here as a line by which the vector is fixed, है ना. तो यहाँ पर अगर आप you just take a tangent at every point, वो इस एक्सिस के साथ हमेशा एक फिक्स एंगल बनाएंगे. इस पूरे हेलिक्स पे आप किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमेशा एक फिक्स एंगल आ रहा होगा ना. तो हेलिक्स इज द
example which having this property that all the tangent lines making a fixed vector, making a fixed angle, constant angle with this fixed vector is axis coordinate fixed rectangle. Okay, क्लियर है भाई? जी सर. हाँ, चलो. चलो एक बार और बता दी. So actually you are right. Circular cylinder is a special case, you can say. The circular helix, जो हम बेसिकली लेते हैं हेलिक्स, R इज इक्वल टू ये जो होता है आपका R A cos थीटा A sin थीटा एंड B थीटा, ये सर्कुलर हेलिक्स की क्वेश्चन होती है. सर्कुलर हेलिक्स इज अ स्पेशल केस ऑफ सच कर्व्स. और भी ऐसे कर्व्स हो सकते हैं, बट हमारे पास जो सिंपल एग्जांपल है, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ट्रिवियल है और एक सर्कुलर हेलिक्स है. So in fact this helix they have one important property, one characterization property in terms of curvature and torsion. जो आपका कर्व का curvature and torsion है उसके टर्म्स में एक important characterization property है. What is that? That is important result actually and which is given in your book as a theorem. Some theorem है पेज नंबर 73 पे आपकी टेक्स्ट बुक पे. What is say? A necessary and sufficient condition for a curve to be helix is that its curvature and torsion kappa and tau है ना are in a constant ratio. That means curvature upon tau is equal to some constant. So it is a characterization property. Whenever you have something necessarily sufficient, it's characterization property if and only if, है ना. So a curve is a helix if and only if kappa over tau is equal to how much? Constant. Constant है ना. ये एक थ्योरम है और इट्स अ characterization property of the helices. So I will prove it. Okay. I will prove it in the अभी कंटिन्यू करूंगा मैं नेक्स्ट, क्योंकि अभी टाइम कम है, बीच में ही डिस्कनेक्ट हो जाएगा आपका ये. तो आप अगेन ज्वाइन, ऑल ऑफ यू प्लीज ज्वाइन अगेन. I will continue in the next Zoom meeting today itself. Yes students. कल करा दें सर, आज सर वैसे ही कनेक्ट नहीं हो पा रहा है सर. अच्छा, एक बार डिस्कनेक्ट हो रहा है सर तो फिर फॉर टाइम ले रहा है डिस्कनेक्ट होने में. ओके यस, और खुद डिस्कनेक्ट हो जाता है सर. और नेटवर्क इशू हो रहे हैं सर. एक ही क्लास मेरी